Meanwhile, cutting across to Shaheen Bagh, where we see high drama that unfolded as bulldozers rolled into Shaheen Bagh, which was the center of the massive anti-CAA protest just about 2 years ago. Bulldozers rolled into Shaheen Bagh for the anti-encroachment drive. Residents of Shaheen Bagh protested as the South Delhi Municipal Corporation launched its anti-encroachment drive with the help of Delhi police personnel. Locals were seen sitting on roads and stopping bulldozers that were brought for the demolition drive. Locals say that there's no illegal construction and that they won't let the anti-encroachment drive. Police during the crackdown detained some of the protesters and those locals. The SDMC has now prepared a 10-day action plan to remove the encroachment from several areas, including Shaheen Bagh. But what we saw eventually as the day progressed was that the bulldozers eventually withdrew. It pulled back after they didn't really find massive encroachments along the vicinity. Whatever few that they spotted, the locals themselves pulled it down before the bulldozers could act. Eventually, the bulldozers withdrew from the locality and left. The Delhi police is finding it much more difficult compared to Jahangirpuri to manage people here who are clearly agitated and angry. Remember, in Jahangirpuri, the demolition drive still had been carried out, but here it is clearly breaking out into commotion and scuffle. Amanatullah Khan, who I just spoke to about a short while ago, said that they will stop. He will ensure that the demolition drive will be stopped, because he does not believe that there is any illegal encroachment here. As you can see here, his supporters, his people here thronging to get in a word from him, and he very clearly told me that he's here to stop the demolition drive, and he's demanding where is the illegal encroachment. Now what you see around you, take a look, that is the bulldozer. Ashok Bhenot will show you just one bulldozer for now here, unlike in Jahangirpuri where there were at least 7, and therefore that is the difference, that even one bulldozer is finding it difficult. I've been here for the past few hours. I can tell you that this one bulldozer is also finding it difficult to carry out the drive. One, because it is on the main road. This is the Delhi-Noida border. It is leading to immediate congestion. They have to take care of that as well. Then, as now he's preparing to pull down some of the illegal structures, the anger is among the locals that is showing, unlike in Jahangirpuri where the situation had been calmed down. As you can see, the force has been now deployed here. Anyone is being detained who is trying to stop the demolition drive and taking law into their own hands. Take a look at these. These are the live visuals on your screen. Anyone trying to disrupt this official order of the Municipal Corporation of Delhi are being detained, are being put in buses. This means that the MCD clearly right now is ensuring that the drive will be on. Delhi police has said they are sending additional police force. As you can see, the CRPF has also been deployed. It's a multi-layered security here that you're looking at on your screen, and therefore the situation clearly is to ensure that there is no commotion that takes place. I'm trying to get you as many perspectives and angles. What you see here is a multi-layered security and a bulldozer, and then the illegal structure. So this is the bus where anyone who is going to break law and order will be detained. So multi-layered security of women personnel, male personnel of Delhi police, then the bulldozer, the JCB, and then the illegal structure allegedly that they are going to now start to demolish. So we are trying to show you exactly how Shaheen Bagh area looks like. Now every time you think of Shaheen Bagh, remember, of course, the recent reason it was in news was primarily because of the anti-CAA protest that had been here. Now we'll try and cooperate with the police personnel as well, as they're not letting us go very towards the location of the site. But unlike Jahangirpuri, I can tell you it's complete commotion in Shaheen Bagh. And, you know, a lot of push and shove by the angry locals here. As you can see, again, Ashok, show to our viewers how there is sloganeering taking place as well by the people. And bulldozer starts to demolish. Take a look at that. Ashok, show to our viewers of how finally the bulldozer is starting to demolish the first structure. This is under, of course, the orders and the plan of the MCD. Now, according to the MCD, this had been in the plan. It is not immediate. It is not a coincidence. The anti-encroachment drive was being planned for the past few days. But because of looking at law and order situation and whether they had enough deployment as well, they were not yet sure. But right now, they have decided to go ahead with it.
that is likely to be the first building that we saw where allegedly the illegal structure is going to be pulled down. There is some conversation that is taking place. Ashok Behnot will show us the MCD officials who are talking and are discussing how to go ahead with the plan. But the police has tried to barricade the area and have tried to ensure that it does happen as peacefully as possible here. चाचा क्या हुआ? ये बुलडोजर तो आया, कुछ डेमोलिश तो नहीं किया उसने? बुलडोजर आया, बुलडोजर तो जो है ना, जो वोट जो है ना, वोटरों को खुश करने के लिए जो है ना बुलडोजर आया है। अच्छा। यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जो बुलडोजर चले, इलीगल नहीं है ना कोई जगह नहीं है। यहाँ सारी की सारी जगह जो है लोगों ने जमीन खरीद रखी है किसानों से और बना रखी। 1700 कुछ कॉलोनियाँ इस तरह की है। यहाँ कुछ गलत है ही नहीं, तो गलत क्यों करेंगे? नहीं था कुछ। जो दुकान थी, जो 150 दुकान थी, वो तो ईद वाले चांद रात को ही उठा लिया यहाँ से। फिर यहाँ कोई भीड़ भाड़ है ही नहीं, ये तो अफवाह उड़ा रखा है। क्या यहाँ पे कुछ नहीं था इलीगल, फिर क्यों आई? वही तो आप लोग बताएंगे, एमसीडी बताएगी ना कि क्यों नहीं है, क्यों नहीं है यार। अगर नहीं है तो ये अच्छी बात है। नहीं अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर आपको क्यों लगता है कि क्यों आए, फिर आए क्यों यहाँ पर? जो गलत है वो गलत है, वो इसका कोई भी साथ नहीं देगा, हम भी नहीं देंगे, कोई भी नहीं देगा। अगर गलत है तो आप सब कोई साथ देगा यहाँ पे। अगर एक आदमी भी जिससे भी पूछ लीजिए कि जो अगर उन्होंने हटाया वहाँ पे वो गलत था तो गलत था। ये सिर्फ इलेक्शन जो आ रहे हैं इसके लिए इन्होंने करा है, राजनीति के लिए, सिर्फ आम आदमी को घटाने के लिए कि ये इस वजह से जो है हम जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने का। Now, quite naturally, politics has erupted over the anti-encroachment drive in South Delhi Shaheen Bagh area. Amanatullah Khan, a legislator of the ruling Aam Aadmi Party, joined in the protest, said that there were no encroachments in the area and that bulldozers were brought only to indulge in vendetta politics. Congress, while slamming the BJP, said that the anti-encroachment drive was nothing but just a provocation and that Muslims were their only target. BJP, in a scathing attack, said that the Congress, the Aam Aadmi Party, are doing appeasement politics and reminded them of this drive as a due process. BJP has also slammed the Congress for giving the demolition drive a communal colour. Let me cut across the several political reactions coming in on the same. First, dividing the country along communal lines, then dividing the classrooms and uniforms along communal lines, then dividing loudspeakers along communal lines, and now dividing even encroachment drive on communal lines. The Congress party should be asked that why should any exception be made for any area like Shaheen Bagh just because it happens to have a particular vote bank that the Congress party wants to cater to? ये जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता कोई यकायक नहीं पहुंच गया, अचानक नहीं पहुंच गए, ये वही पुनरावृत्ति दोहरा रहे हैं जो इन्होंने मनीष सिसोदिया ने कहा कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को आप संरक्षण दो, इसीलिए वहां लेटने का काम कर रहे हैं। जो लोग अतिक्रमण को बचाने के लिए, जो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के अतिक्रमण को बचाने के लिए, आतंक फैलाने वाले लोगों का अतिक्रमण बचाने के लिए जो बुलडोजर के सामने लेटे हैं, जनता भी उनको लेटाने वाली है। अब ये तो कह रहे हैं कि हम प्रोसेस से कार्रवाई कर रहे हैं, अनेकों कॉलोनियों में कर रहे हैं, लेकिन आप विक्टिम कार्ड, मुस्लिम कार्ड। मैं 3 दिन पहले आया था, मैंने खुद आह्वान किया लोगों से, लोगों ने इंक्रोचमेंट को हटा लिया। अब ये मुझे बता दें इंक्रोचमेंट है कहाँ? अगर इंक्रोचमेंट है मैं खुद तुड़वा लूंगा, मैंने खुद तुड़वाया है। एक मस्जिद के आगे वुजू खाना था, 2 टॉयलेट थे, अपनी जेसीबी 2 दिन चलाकर खुद तुड़वाया है। इस रोड पर मुझे बता दो दे यहाँ इंक्रोचमेंट है। इसका तो इंतजार करना होगा। उन्होंने बताया कि जोनल ऑफिसर आके चिन्हित करेगा। वो जब आए थे, जोनल ऑफिसर आया था, मैंने सारा हटवा दिया था। जो उन्होंने इंक्रोचमेंट बताया था हमने खुद हटवा दिया था। यहाँ का एसएचओ भी जानता है, डीसीपी भी। बताइए शाहीन बाग में इस तरह का विरोध क्यों? आखिर सरकारी लोग, एक सेकंड सर, आपको भी पता होगा, आप चुने हुए विधायक है, सरकारी काम में दखल अंदाजी कानून के खिलाफ है। देखिए एक बात सुनिए, ये पीडब्ल्यूडी का रोड है, अगर ये गलत करेंगे तो लोग तो आएंगे ना। मुझे मेरे से बात करें एमसीडी के लोग, यहाँ लोकल पुलिस भी है, आए वो मुझसे बात करें, मुझे बताइए ये इंक्रोचमेंट है, मैं खुद तुड़वा लूंगा। एमसीडी वाले सर्वे करके, पुलिस ने भी सर्वे कर रखा, सिर्फ और सिर्फ भाजपा राजनीति कर रही है। पिछले 15 साल से एमसीडी में काबिज भाजपा ने इंक्रोचमेंट, पहले पूरी दिल्ली के अंदर इंक्रोचमेंट कराया और इंक्रोचमेंट पे उगाई करी है। जब इन्हें लगा कि पिछले 9 तारीख को जैसे 9 चुनाव की डेटा क्लियर होने वाली थी, तमाम पत्रकार बंधुओं को बुलाया गया था, लोकतंत्र की हत्या हुई है,
चुनाव को पीछे धकेल दिया गया। अब ये इन्हें सपना है कि दिल्ली के अंदर हम 4 राज्यों में जैसे एमसीडी में राज्य जीत के हैं, एमसीडी में भी बुलडोजर चला के जीते। भाजपा का एक राजनीतिक स्टंट है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर आप जा करके ऐसे मोहल्लों को टारगेट करते हैं जहां से आप ये संदेशा देते हैं पूरे देश को कि देखिए हमने गरीबों पर, मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया है, जबकि यहाँ अतिक्रमण जैसी कोई बात नहीं है। आज बुलडोजर की कार्रवाई कोई हुई भी नहीं, लेकिन देश को मैसेज दिया गया। सच्चाई यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी अतिक्रमण हटाना चाहती है तो उसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आर.एस. गुप्ता के घर से करे, जहां पर उन्होंने बहुत अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी तमाम विजुअल देश के बड़े चैनलों ने दिखाया है। आप पहले अमीरों के घरों से आइए, हटाइए, बाद में गरीबों तक आइएगा।